राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग? Okay, today I'm going to start with our current affairs series and this will be in a 3 parts. This is the first part. So the first news is recently क्या हुआ है कि एक RPF constable ने he has while moving from the जयपुर से मुंबई expressway तक he has killed the 3 people. He was the RPF constable and he killed 4 people, 3 passengers and 1 senior cop. So basically, well, the person he's the RPF constable and to whom he killed, he was the senior, he was from the GRP. Now, the question comes, what is RPF and what is GRP here? RPF is a railway protection force and GRP is a government railway police. So RPF it comes under the Union Ministry of a Railway और GRP जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है. इट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट पुलिस. सो बेसिकली जो कांस्टेबल है वो RPF से बिलोंग करता है, जो सीनियर वो GRP को बिलोंग करता है. हमारे लिए इंपॉर्टेंट बाकी न्यूज़ नहीं है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जो रहती है वो इंपॉर्टेंट है कि RPF और GRP क्या होता है. ठीक है. सो बेसिकली रेलवे RPF इट कम्स अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड GRP इट कम्स अंडर डिस्ट्रिक्ट पुलिस. राइट. RPF जो है वो 1957 में एंड विद अमेंडमेंट हुआ 1985 में ये आई. एंड GRP इसका मेन काम होता है टू डिटेक्ट एंड टू प्रिवेंट दी क्राइम्स, टू असिस्ट दी RPF. वहीं पे RPF का वर्क होता है. इट इज़ हेडेड बाय दी DG डायरेक्टर जनरल टू प्रोटेक्ट railway asset and passengers. Next news is new violence, communal violence, which happens recently in Haryana, Gurgaon. Communal violence, it is disturbing the secularism, which is the salient features of our Indian constitution. So what was the whole incident is एक विश्व हिंदू परिषद एंड बजरंग दल. सो बेसिकली विश्व हिंदू परिषद जो है वो ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा विद द परमिशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इट वॉज गोइंग फ्रॉम द गुड़गांव से फिरोजपुर तिरखा जाने वाली. सो ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पे प्रोवोकेटिव स्लोगन्स एंड स्टोल पेल्टिंग होना शुरू हो गए एंड दिस लीड टू सच इंसिडेंट. बट दैट वाज द इमीडिएट रीज़न कहा जा रहा है. बट अपार्ट फ्रॉम दिस इसके रियल रीज़न है कि एक ऑब्जेक्शनेबल वीडियो, बिकॉज बजरंग दल के जो हेड हैं दैट इज़ मनु मानेसर, ही इज़ अ सस्पेक्ट एंड ही गिव अ ओपन चैलेंज कि वाइल दिस यात्रा ही विल बी देयर ड्यूरिंग दिस यात्रा अगेन. सो दिस हैज़ समहाउ इट वॉज अगेंस्ट दी अदर कम्युनिटीज एंड दिस लीड्स टू दी कम्युनल वायलेंस. वहाँ पे अब सेक्शन 154 इम्पोज हो चुका है. इंटरनेट सस्पेंड कर. हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कम्युनल वायलेंस, जो कि इंडियन सोसाइटी की का सोशल इश्यूज का भी पार्ट है. कि देयर कैन बी अ मेन क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस इज कम्युनलिज्म. इट वाज एंड कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द मेजर चैलेंज टू डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री. Critically examine this thing, so there can be a question regarding. So this is one incident which took place, communal violence, and it is disturbing the salient feature of our Indian constitution, that is secularism. Now we have the next news, that is a cinematographer bill. ये स्पेसिफिकली पायरेसी को ख़त्म करने के लिए और भी इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस थे जो होने चाहिए थे उसके लिए लाया गया था. तो इस ये एक्चुअली सिनेमेटोग्राफर एक्ट 1952 उसको अमेंड करके नया जो अमेंडमेंट बिल है 2023 ड्राफ्ट 2021 में ही कर दिया गया था. सो आई विल टेल यू व्हाट आर द मेजर थिंग्स व्हिच हैपन्स हियर. So to keep pace with the changing time for effective film certification and to curb piracy, the draft bill has proposed certain changes to the 1952 Act. What does 1952 Act talks about? It provides for the prior examination by CBFC, Central Board of Film Certification, which is also called Censor Board, for certification and for regulating exhibitions. Few important changes that take place in this new bill, that is first categories of film certification. पहले जो the existing categories under section जो पहले categories 1952 Act में जो exist करती थी वो थी, that is एक under U certificate होता था, that is unrestricted public exhibitions. एक under 12 होता था restricting parental guidance for children under 12. एक for mainly for A certificate होता था, that is only for adults. एक S होता था which is only for a class of person. 4 होती थी. इस बार सच चेंजेस में क्या लाए गए हैं? टू मेक चेंजेस इन द कैटेगरीज ऑफ फिल्म्स अंडर सेक्शन 41 ऑन अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन बाय इंट्रोड्यूसिंग एज बेस्ड कैटेगरीज. इस बार एज बेस्ड कैटेगरीज के बेसिस पे किया है, दैट इज अंडर 7+ कैटेगरी, एक अंडर 13 और एक अंडर 16+. सो ये 3 कैटेगरीज के अंदर डिसाइड किया है. दूसरा जो चेंज किया है दैट इज़ अ वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट. तो पहले जो एग्जिस्ट करती थी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी दैट इज ओनली फॉर 10 ईयर्स के लिए थी. बट दिस टाइम दे डिसाइडेड सर्टिफिकेट विल बी परपेचुअली वैलिड, हमेशा के लिए रहेगा. नेक्स्ट जो है दैट इज डिविजनल पावर ऑफ दी सेंट्रल गवर्नमेंट. पहले जो भी CBFC डिसीजन मेकिंग ली उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक रिविजनल पावर्स होंगी ऑन द अकाउंट ऑफ वायलेशन ऑफ दिस एक्ट. राइट. सो इसके लिए decision लिया गया कि how the government would have a revisional powers if complaint is received and in sync with a reasonable restriction under Article 19 of the Constitution. Next जो important है that is the film piracy को लेके. Right. So to protect the film industries and the government from revenue losses
It caused due to the release of pirated versions of films on internet by adding section 60A to prohibit unauthorized recording and section 7A to provide for penalties on violation of section 6A. So it prohibits carrying out or abetting unauthorized recording or exhibitions of the films. It also provides separate certificate for TV and for other media. These are the 4-5 things which took place. CBFC, which is also called Censor Board, it has a headquarters in Mumbai. It has plus 9 regional offices. It is a statutory body under the sections Cinematographer Act 1952, prior examination of films as per the 1952 Act, Cinematographer Rules 1983, which has been amended. अब नया bill है इसके लिए, and guidelines from CG Act 1991, based on which it can sanction the film for public exhibitions under various categories. Right now we have some 3 categories, age-based categories: direct exhibition or modification before sanction, or refuse to give sanction for public exhibitions. And I'm putting the link in the comment section for the communal violence. दृष्टि IAS का एक आर्टिकल है, एडिटोरियल आर्टिकल बहुत अच्छा है, एंड सिनेमेटोग्राफर का विजन IAS में. सो आई एम पुटिंग दैट लिंक, और मैं एक टेलीग्राम लिंक भी डाल दूँगी अपना, सो दैट अगर जो वो उसके नोट्स नहीं हैं तो वो वहाँ से फॉलो कर सकते हैं. Now we have the next news where the Gujarat CM, he said that parental consent is important in love marriage and for love marriages, and for that he's trying to include in this monsoon session, to include in our constitution. But इससे पहले एक related question भी आया था, that is right to marry, that comes in our article 21, that they have a, we have a right to life and personal liberty. At the same time, it is also the social issues, that is ये है, इसका भी मैं in the same article दृष्टि IAS का ही है, वो मैं link में डाल दूँगी कि please read it if you want to write the long answers. That is issues with the interfaith marriages. ये एक social issues में है, that will be a long thing, and I will explain for every topic. I'm going to explain in the separate video. So ये एक स्पेशल मैरिज एक्ट में है, where the गुजरात CM he want to include the parental consent in a love marriage. So ये एक स्टेट एक्ट में बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टेट में का जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें इंक्लूड किया जाए. So there are issues with the interfaith marriages. उसी से रिलेटेड एक आर्टिकल है, मैं लिंक में डाल दूँगी. अपार्ट फ्रॉम दिस वी डोंट हैव टू गेट व्हाट इज इनसाइड, वी जस्ट हैव टू गेट विद द एग्जैक्ट टॉपिक. Recently there has been a debate on this Manipur incident violence which happened. So in parliament की बात चल रही है. So इसमें rule 267 versus rule 176 of the parliament, that comes in a rules of procedure, which is very much in news. Now what is this rule 267 versus rule 176? First 267 जो कहता है, so rule 267 जो कहता है, it is like emergency rule to suspend any rules application related to the day's listed business and discuss an urgent issue of the public importance. कि मतलब सिर्फ वही एक टॉपिक डिस्कस किया जाए, बाकी सारे कोई और भी डिस्कशंस, कोई और टॉपिक डिस्कस नहीं किए जाएंगे. दिस इज व्हाट ऑपोजिशन इज टॉकिंग अबाउट. सो इसके लिए आई एम टॉकिंग अबाउट रूल 267. यहाँ पे एन ऑपोजिशन मेंबर्स इट कैन गिव नोटिस. In case of Rule 267 and opposition members, it can give notice under Rule 267 requesting the suspension of all the listed business for the day to discuss the urgent matter. If the chairman consents and the motion is carried, the Rajya Sabha can suspend the regular business and devote their time to address that emergency, that pressing issue. And the format इसके लिए, the discussion can suspend all the listed business, allowing time for its depth debate. मतलब बहुत लंबे समय तक इसका depth debate, लंबी discussion इसके ऊपर चलेगी. And voting, no formal motion is required for this voting. And they said that discussion, for example, जैसे अभी मणिपुर discussion situation है, and other urgent matters of the public importance, they can do this. And in case of rule 176 जो रहता है वो होता है to allow for a short duration. इसमें भी important discussions ही होते हैं, but not exceeding, एक time limit में किए जाएंगे. ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 2.5 आवर्स ऑन अ मैटर अर्जेंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस. इसमें भी इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन पहले वाले में क्या है, डिस्कशन होगा लेकिन कोई और टॉपिक का डिस्कशन नहीं होगा, पूरे दिन भर चलेगा. लेकिन इसमें बोला कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा, इसमें भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो, लेकिन बाकी भी चले, बाकी भी हम बात कर सकते हैं. अब इसमें रूल 176, अ मेंबर कैन गिव नोटिस इन राइटिंग the secretary general supported by the signature of at least two-thirds other members stating the specific matter they wish to raise. The chairman, in consultation with the leader of the council, will then fix a date and time for the short duration discussion. The discussion is time bound होता है, limited 2.5 hours, and no formal motion or voting is required. और इसमें डिस्कशन होंगे like discussing the price rising of essential commodities, border issues with China, these kinds of issues. 176. So now we have the next topic, that is the urban flooding. So we're going to talk about the rising challenges of urban floods in India. There has been an increasing trend of urban flood disasters in India in recent years,
whereby major cities like Mumbai, Chennai, Delhi, Kolkata have been severely affected. Urban flooding occurs in very quickly as compared to the rural flooding, right? Because as urbanization, it leads to developed catchments, which increases the flood peaks from 1.8 to 8 times and flood volumes up to 6 times. And what are the factors which is contributing to the urban flooding? That is of meteorological, heavy rainfall, cyclonic storms होना, cloud burst हो जाते हैं, hydrological reasons and synchronization of runoffs from various part of the watersheds, absence of the overbank flows, channel network, human related issues हैं, obviously land use charges, encroachment of the flood plains, changing urban microclimates. Urban flooding is inundation of land or property in a built environment, particularly in more densely populated areas like cities, caused by the rainfall overwhelming the capacity of a drainage system. इसके बहुत सारे causes हो सकते हैं, that is encroachment on drainage channels में, over lakes में, wetlands या river beds में, climate change होना, unplanned tourism activities हैं, release of water from dams, uninformed sudden release of water, illegal mining activities. It has huge impacts like damage to the vital urban infrastructure ka, loss of life and damage to the property, risk of epidemics, deteriorations of water quality, economic losses, and there are so many initiatives which have been taken by the government for that. This can be as proper main questions. For that I will provide you a link. Again, it is of Drishti IS ka and also the Vision IS. So main question proper हो सकते हैं, जैसे India's for example, जैसे एक question था उसमें मेंस का, that is India's urban planning machinery has not evolved at the rate of urbanization. Provide appropriate arguments to support this statement. There was one more question, that is with reference to the National Disaster Management Authority guidelines, discuss the measures to be adopted to mitigate the impact of recent incident of a cloud burst in many places of the Uttarakhand. This was in mains 2016. I will provide you a link of this Drishti IS in the comment section. So apart from this, what are the initiatives that can be taken for this? Initiatives is the urban flooding termed as a separate disaster considered here, dealing from floods along with the separate NDMA guidelines, National Disaster Management Authority guidelines for the same. एक अलग सेपरेट डिजास्टर अर्बन फ्लडिंग को ट्रीट करने लगे हैं. इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम विच इज कॉल्ड एज अ इनफ्लोज मुंबई बाय नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च NCCR से इंटीग्रेटेड कोस्टल फ्लड वार्निंग सिस्टम कॉल्ड फ्लोज बाय NCCR देने लगा है. डेवलपमेंट ऑफ दी स्पॉन्ज सिटीज अंडर द जल जीवन मिशन अर्बन में. ग्लोबली देयर हैज़ बीन अ पुश टुवर्ड्स मैक्सिमाइज ग्रीन एंड ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाए, जैसे कि अर्बन फॉरेस्ट, लेक्स या वेटलैंड्स इंक्रीज किए जाएँ एंड मिनिमाइज ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, राइट, सच एज द इनपर्मिएबल सर्फेसेज ऐसे उसमें. So these are the topics of the part 1. For the rest of the topics, watch the next video that will be of the part 2. Thank you. Radhe Radhe.